Now the first thing with GK, general knowledge and current affairs, is that बहुत सारा सिलेबस है, राइट? तो मैं बस आपको स्ट्रीमलाइन करना था कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आप हर एक कंट्री के लिए कर सकते हो। एक तो हर एक कंट्री का एक इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे होगा, तो वो आपको याद कर लेना चाहिए, जो 10 कंट्रीज़ हैं और उनके जो भी कंट्रीज़ है जिनमें वो लैंग्वेज बोली जाती है उनके भी, और हर एक कंट्री के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका आपको लिस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन, या आपके पास जो भी मटेरियल है उन सब में ये सब आपको मिला होगा। अब जो स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है, ये सब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मोटा मोटी ये सबको पता होगा, ये आप लोग ढूंढ सकते हैं, ये इजी है, आपको बस याद रखना है या पढ़ के बस आपको नोट्स बनाने हैं उनके। तो नेशंस का इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उनका नेबरिंग कंट्रीज़ एंड नेचुरल बाउंड्रीज। बाय दैट आई मीन कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बीच में एक तो हमारी बाउंड्री तो है, बट हिमालय एक्ट्स एज लाइक अ नेचुरल बाउंड्री। तो वैसे हर एक नेशन में, हर एक कंट्री में ऐसा नेचुरल बाउंड्री होगा, लाइक ओशंस, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, स्ट्रेट्स एक्सेट्रा। तो उसका भी आप नोट कर लीजिए। एथनिसिटी, हर हर नेशन में उनके यूनिक एथनिसिटीज़ है। जैसे चाइना में हान एथनिसिटी है 92%, वैसे हर एक नेशन का होगा। ये आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, इसका मुश्किल से 2 मिनट लगेगा सर्च करने में। तो फिर है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये आप, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस मच। एंड फ्लैग्स, सो बेसिकली हर एक कंट्री का फ्लैग है, तो उसमें जो द वॉट एवर द कलर्स डिनोट वो, एंड वॉट एवर द characters or whatever, like the animal is there on the flag, what is the importance of them, वो आपको पूछा जा सकता है। जैसे जब मैंने 2019 में पेपर लिख दिया था तो उसमें स्पेन के फ्लैग के बारे में पूछा गया था, तो वैसे आप लोग को भी पूछा जा सकता है, तो वो रखिए। वैसे नेशनल एनिमल, बर्ड, ड्रेस, फूड एक्सेट्रा ये भी आप लोग ढूंढ सकते हैं अपने आप में से, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स में जैसे व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर और द लेक और लाइक द हाईएस्ट माउंटेन, तो वो सब आपको भी मिल जाएगा ऑनलाइन। और अगर आप लोग को विकिपीडिया पे नहीं जाना है तो एक साइट है ब्रिटानिका करके, इट्स मच मोर रिलायबल, तो वो भी बस एक ऑनलाइन सर्च मारो ब्रिटानिका पे, आपको ये सब मिल जाएगा। The list of prime minister and presidents that these countries have had, along with Nobel Prize winners, Oscar or Grammy or Pulitzer awards, ये तो सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ओके, एम आई अंडरस्टूड? अगर कोई Now first country in East Asia is China. As you all know, China बहुत इम्पोर्टेंट हो रखा है आजकल के ज़माने में, यूएसए को टक्कर दे रहा है। The first, like a brief history, what went on with China is that it had a long dynastic rule, which started before Christ and it went on up till the 20th century. तो आपके पास Xia dynasty है, Shang dynasty है, Zhou dynasty है. Now, Zhou dynasty is important because Confucius, the man behind Confucianism, the religion, came into the picture. Now, आप लोग को पता होगा कि चाइना में सब मेजर रिलीजन है बुद्धिज़्म और कन्फ्यूशियनिज्म, तो अगर आपके पास टाइम हो तो कन्फ्यूशियस के अंदर थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। फिर वॉरिंग स्टेट्स पीरियड, बेसिकली इस टाइम पे चाइना में कोई स्टेबल राज नहीं था किसी का भी, कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कंटिन्यूस वॉर्स थे। फिर फाइनली छिन डायनेस्टी केम इनटू द पिक्चर which unified China. उसके बाद Han dynasty came. Now, the majority ethnicity in China is Han ethnicity. It was born from this dynasty. इस डायनेस्टी में जो कन्फ्यूशियस रिलीजन है उसके
morals and values, they were incorporated into the rule of the emperor. तो उसकी वजह से Confucianism became more than just a religion in China, and it got merged with society and it became a part of their tradition rather than just a religion. Then came the Sixth Dynasty's period, which was also an extremely unstable period, and Buddhism was introduced. Now, Buddhism in China came via India through the Silk Route. आप लोग एंड इनमें इन तीन किंगडम थी, चिन एंड नॉर्दर्न एंड सदर्न डायनेस्टी. फिर स्ट्री डायनेस्टी, थांग डायनेस्टी. ना थांग डायनेस्टी में द चाइना में के जो पोएम्स थे, नॉवेल्स थे, शॉर्ट स्टोरीज थे, आर्ट एंड पॉटरी एंड ड्रामास, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, they were explored a lot by the राजाओं और जो भी citizens थे उनसे भी. The five dynasties: Song dynasty, Yuan dynasty. Now Yuan dynasty is different from the ones before it because the ethnicity changed to Mongols. ना अगर आप लोग ने चाइना का मैप देखा होगा, जो आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा, जो मंगोलिया है उधर से लोग रिसर्ट इन्वेडिंग चाइना, एंड वट एवर द कोट एंड कोट एथनिक चाइनीज वर, द मंगोल्स स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम. फिर उसके बाद जब मिंग डायनेस्टी आई तो वापस हान की रूलिंग उसके ऊपर हो गई थी. एंड छिंग डायनेस्टी अब रिसेंटली है, which was not, they were not ethnic Chinese people, they were not Hans, they were actually the Manchus. उसके वजह से चाइना में अभी बहुत डिस्कोर्स आ रहा है in the form of the Hanfu revolution. I will explain it in a while. Now the Qing dynasty ended because of it sort of coincides with the May 4th movement. फिर उसके बाद May 4th movement के बाद there was a brief period of Republic China. ये था World War One. प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू. द रिपब्लिक चाइना का पीरियड था World War One and World War Two, which entailed China being occupied by the Japanese, and it led, and हम सुनते हैं ना कि जब जो भी जर्मन्स ने जूस पे किया था जर्मनी में, it's that sort of occupation was what was going on in China with the Japanese there. One of the main events of the Japanese occupation is the Nancing Massacre. Yeah, point कर लीजिए. This is still something that hurts the Chinese's pride till date, and they have not forgiven Japan for doing that, the Nancing Massacre. Then 1949 में, before the Communist Party took over China, and it's now we know it as People's Republic of China, there was a tiff between the KMT and the CCP. Eventually, the CCP won, and the KMT had to run to Taiwan and set shop there. Now, चाइना में ये मैंने अलग से बना के रखा है क्योंकि उस देश में बहुत revolutions हुए हैं. The major revolutions is the May 4th movement, which started in May 4th, 1919, of a cultural revolution from 1966 to 1976. It ended in 1976 because Mao Zedong died then. Now, the Great Leap Forward is not a revolution. It wasn't even a movement, but it was the second five-year plan on the economic and social aspect brought forth by the Communist Party of China as part of their regime. Now, the Great Leap Forward is important because it led to a very massive famine. And the Cultural Revolution, along with the Great Leap Forward, led to the downfall of China.
If it wasn't for Deng Xiaoping in 1978, China would not be where it is right now. So the man who is responsible for moving China's faith around, his name is Deng Xiaoping, and in 1978 he brought forth economic uh, treaties which changed the face of China. Now, in 1989, we had the infamous Tiananmen Square protests. I'm sure आप लोग ने वो photo देखी होगी, like a solitary man in front of the um, like a tank. So this took place in the Forbidden Palace. The Forbidden Palace is a monument in the capital of China, in Beijing. तो वहाँ ये हुआ था, and it was extremely brutal. Now, all of these, what I've named up tak Tiananmen Square tak, they are social movements brought forth because the citizens wanted a social and economical change with the way the society functioned. Now, the Hanfu movement is a very social cultural movement. It has no economical value to it. It's mostly that because let me go back, because the last dynasty was the Qing dynasty, as I'm highlighting here, and they were the Manchus. Now the Manchus were not ethnically Han, and 92% of the Chinese population as of today is Han. So the Hanfu movement is basically the Han ethnicity, the Han population of China wanting to bring back Han ethnic clothing. जैसे ट्रेडिशनल क्लोथिंग होती है, सो द हान तो हर एथनिसिटी की खुद की ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, तो द हानफुल मूवमेंट इज बेसिकली दैट. This is a relatively newer movement and it's mostly relegated on like the internet space. अगर आप लोग को कॉस्प्ले पता होगा तो ऐसे चाइनीज स्ट्रीट्स पे जाके लॉट ऑफ पीपल ड्रेस अप इन लाइक हान एथनिक क्लोथिंग. Now, the harmful movement has brought about a lot of debate regarding majoritarianism and minority rights. If you are interested, you can read more into it. But अब तक के लिए इतना है. Then comes geography. Now, जो बेसिक था कि चाइना के नेबरिंग कंट्रीज, दे आर 14 नेबरिंग कंट्रीज, उनके नाम आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, और उनका नेचुरल बाउंड्रीज वो है. One more unique thing with China, because it has almost border issues with all of its neighboring countries. आपको इंडिया चाइना के 2020 में जो गालवान skirmishes वो सब हुए आपको पता होगा. तो the borders between nations are often named. जैसे एग्जाम्पल है कि इंडिया और चाइना के बीच में देयर इज अ मैकमोहन लाइन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज. तो वैसे आपको नाम भी मिलेंगे. अगर आप लोग को अगर आप लोग को नाम नहीं मिल रहे हैं तो बता दीजिए, मैं लिस्ट बना दूंगी, पर अभी के लिए तो ऑनलाइन मिल जाना चाहिए. और नेचुरल बाउंड्रीज है जैसे हिमालयाज, साउथ चाइना सी, यालो रिवर इज बेसिकली अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. तो ऐसे ऐसे आपको नेचुरल बाउंड्रीज का भी ध्यान रखना होगा. Now, China is divided into 33 administrative units. There are 22 provinces. उन आपको provinces के नाम तो याद नहीं रखने होंगे, पर एक दो के नाम अपने दिमाग में रख लेना, जैसे आनहुए, क्वांचोंग, पेचिंग, Shanghai, etc. And wait, Shanghai is a city, sorry. And there are 5 autonomous regions like Inner Mongolia, Guangxi, Tibet, Ningxia, and Xinjiang. Then 4 municipalities, Chongqing, Beijing, Shanghai, and Tianjin. And 2 special administrative regions, Hong Kong and Macau. Now, एक्सक्यूज मी दी, yes, yes. ये यालू रिवर कौन से दो, चाइना और उसको कौन से कंट्री को ये करता डिवाइड करता है? In North Korea. थैंक यू. Uh, uh,
आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम एंड में वी कैन गो थ्रू देम एक साथ। थैंक यू। नाउ आप सबको पता होगा कि हांगकांग वाज अंडर द ब्रिटिश, और 90s में ही it signed a treaty that for like 50 years it will be under the rule of China, and then it will, like, the status of Hong Kong is still up for debate. और पिछले 2-3 सालों से हांगकांग में बहुत प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं बिकॉज हांगकांग डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ चाइना, दे रादर वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना। सो उसके वजह से जियोग्राफिकली उधर बहुत बहुत लड़ाई हो रही है अभी, ठीक है, और अभी तो और हाइटेंड हो गया है। और Taiwan is also a very messy issue क्योंकि China considers it as a 23rd province, but as we know that Taiwan has its own administration, has its own government, it even has its own flag. So it's a bit messy, but China का स्लोगन है क्या है, टू गवर्नमेंट्स वन सिस्टम। Basically, basically Taiwan and China are just one. They just have two forms of government. Now this is a bit complicated. मैं ऐसे समझा नहीं सकती हूँ, but अभी के लिए you consider Taiwan as part of China for the time being, unless there's more news that comes up. Also, an interesting thing about Taiwan is that it's still the only Asian country, if I'm not wrong, which allows LGBTQ marriage. That's the only Asian country. तो ये भी एक पॉइंट है, आप रख सकते हैं। Now, China में there are 56 ethnicities, of which 92% are Han, and only 8% are minorities. So because of that, we can conclude that China is a pretty homogeneous country, but because of the huge economic growth it has had over the past 30 years, and a lot of Western uh, businesses are setting shop in China, there is room for a lot of um, nationalities and ethnicities traveling to China for better opportunities and all of that. So China may not be homogeneous for long now. Now, for language, we have modern standard Mandarin. Uh, language is one, but on the Chinese notes ना, पैसे के जो पैसा होता है बैंक नोट्स पे, उसमें there are 5 official languages. तो जब आप लोग बाकी कंट्रीज का भी पढ़ोगे ना, तो अगर आप लोग को कोई ऐसा आर्टिकल या कुछ मिल सकता है कि उनके सपोज यूरोप पे कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, या जापानीज करेंसी में या कोरियन करेंसी में, that also helps. That can also be something that can be asked. On the religion side, as I already explained, Confucianism and Buddhism are the major religions followed, but you will find traces of Christianity as well as Christianity मिलेगा. But majorly it's Confucianism and Buddhism. Oh, Taoism is also there. Taoism is also it's for us we can look at it as a religion, but for the Chinese it's more like cultural practice. So yes. Now the type of government in China is a one-party state. The the Communist Party themselves like elect the president, and then like right now it's Xi Jinping, and in 10 years time it will be someone else. So अभी के लिए चाइना का तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में मोटा मोटी तो यही है. अगर if you are too worried about
द हिस्ट्री एस्पेक्ट, क्योंकि इतने सारे डायनेस्टीज है, तो ज़्यादा घबराए मत, बस फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द नेम्स। उनका छोटा छोटा एक्सर्ट्स होगा ऑनलाइन, बस वो पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप छिंग डायनेस्टी, रिपब्लिक पीरियड और अभी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इन तीन को दीजिए, बिकॉज दीज आर रिलेटिवली पार्ट ऑफ लाइक करंट अफेयर्स, क्योंकि वट बिकॉज 20th सेंचुरी चाइना वॉज वेरी केओटिक। तो अब तक जो भी 20th सेंचुरी में हुआ है उसका इम्पैक्ट हमें अभी मालूम पड़ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कल्चरल रेवोल्यूशन, during the cultural revolution, or around that time, if I'm not wrong, the one child policy China's one child policy was implemented because there was too much population in China. But right now, all three of the East Asian countries like China, Japan, Korea, even Taiwan, they have the lowest birth rate in the world right now. Taiwan being the lowest at somewhere around 0.3. So this that can also be questioned. Okay. तो चाइना का तो हो गया। नेक्स्ट जापान। अब जापान में ब्रीफ हिस्ट्री ना, तीन पीरियड में ऐसे डिवाइड किया है: क्लासिकल पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। नाउ क्लासिकल पीरियड में Buddhism played a huge role with with Japan in the form of their governance as well as social and cultural traditions. So, and Japan got Buddhism through China. China got Buddhism from India, and then it traveled from China. Buddhism traveled all over East and Southeast Asia. That's how Buddhism has spread in the world. Also, one more thing that China has given to Japan is, अगर आप लोग को पता होगा, जापानीज में तीन स्क्रिप्ट्स होती है: हिरागाना, कथाकाना एंड कांजी. Now kanji is just Chinese characters. So hiragana and katakana already existed. So the Japanese people incorporated the Chinese characteristics into their writing as well. So often when you look at Chinese and Japanese scripts, you may get a bit confused because the similar characters are there, but even though the characters may be the same, the way you pronounce them and the meanings that they hold may differ completely. So now, then the Nara period came, and then the Heian period came. Now, in the medieval period, there was a military rule, as samurais replaced nobles, and the imperial court remained in Kyoto. But shoguns, governing organizations, were based in Tokyo. Now, often right now, Japan's capital may be Tokyo, but in the ancient world, during the times of samurai and shoguns, Kyoto was more important. Like Kyoto was the center of everything that was going on. So bear that in mind. Then came the Keimu Restoration, and then the Ashikaga period. Again, the trends you will see in China, Japan, and Korea is that each of these three countries will have a period, like a warring period, where everything is chaotic, like there are constant wars going on, and then there is unification happening. That's how it works. आप अगर इंडियन हिस्ट्री में भी देखोगे तो वो भी आपको दिखाई देगा. फिर Ashikaga period came in, country at war, there were wars happening had lengthy destructive civil wars, and then finally unification. Then the Edo period came, military governance took place, and then there was
peace. Like during the Edo period, if I'm not wrong, Japan was largely secluded from the world. Mostly there was just European merchants coming in from the sea, but none of the European nations ever took over Japan. Just say how the British took over India, or how even China was in a semi-colonial state. Japan was never colonized by anyone. That is something that's different compared to say China or Korea. Now Korea, yeah. And then the modern period came, the Meiji era. And during this time, I think the West, because of trade and exploration of the world, people started uh, economic handovers took off, and Japan could not stay isolated from the world any longer. So instead of subjugating itself as a colonized piece of land like India, it started having equal relationships. And because of that, there was an interchange of cultural values, and quote unquote like Western values started being spread in Japan, excuse me, and like religions like Christianity took off, uh, and all of that. And after that was the Taisho period and the Showa period. And from 1945 to currently, we have the Heisei era, which ended just in 2019, and right now we have the Reiwa era. Now, what does the Heisei and the Reiwa mean? Basically, China is a constitutional monarchy. Basically, like the British, Jahan, where they have their royals and all. Japan too is like that, and the name of the current ruler in China is Reiwa. He took place in 2019. Now, geography. Now, as you know, Japan is placed on the Pacific Ring of Fire, and that area is prone to a lot of earthquakes and underwater volcanic eruptions. Japan even has the famous Mount Fuji, which has remained dormant up till now. But yeah, so there are five main islands. There's Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku, and Okinawa. इधर दिया है like Hokkaido is the northernmost island. Honshu is the largest and the most populous with Tokyo on it. Okinawa is the smallest and southernmost. So ये नाम तो आपको याद रखने होंगे. इसका तो कुछ नहीं हो सकता. And across these five islands, there are eight regions: Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, and Kyushu. And उन 8 regions के अंदर there are 47 prefectures. Now I don't think आपको prefectures के नाम याद रखने होंगे, पर एक दो के नाम आप ऐसे पढ़ लीजिए, अपने आप को familiarize कर दीजिए. बट आपके 5 islands के नाम और 8 regions ये आप अपने दिमाग में रखिए, पूछ सकते हैं. Now because Japan is an island country, it as such does not have like physical neighbors the way India does, but it has maritime neighbors, and that is China, North Korea, South Korea, Philippines, Russia, US, and Republic of China, Taiwan. Now, ethnicity, language, language तो वैसे Japanese है. Ethnicity आप लोग देख सकते हैं अपने आप. Again, these are very factual things. I don't think I have to explain these to you. Religion में there is Buddhism and there's also Shintoism. ये दो है. And the government is a constitutional monarchy. Like they have a constitution and the monarchy still exists. On top of that, the one more pointer. आप जो भी countries के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट हुआ है उस कंट्री में,
वो dates भी याद रखिए. Those will be important too, I think. Okay. Next is Korea. Now, chronologically, there were the three kingdoms, Nasila, Bekche, and Goryeo. ये three kingdoms were like, अगर आप लोग ने साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बेसिकली वहाँ तीन किंगडम्स ही थी ना, वो बस अपने आप में झगड़ते थे, पहले कोई आ जाता था फिर कोई. कोरिया में भी मोटा मोटी वैसे ही हुआ. एंड फाइनली द गोर्यू डायनेस्टी टुक ऑफ. Then the Joseon dynasty came in. Then we had the Korean Empire, and then we had the Japanese colonial rule. Now Korea also was not occupied by any of the European nations. Like हम इंडिया में, like जब हम इंडिया में पढ़ते a country was colonized, हम usually सोचते कि कोई यूरोपियन नेशन आया, या तो ब्रिटिश होगा या फ्रांस होगा या स्पेन होगा या पोर्चुगीज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई थिंक because Japan aligned itself with the Axis powers during World War II, and they started expanding in East and Southeast Asia. Korea and the other Southeast Asian countries. उसके वजह से because Japan was part of the Axis powers and it took over East and Southeast Asia in hopes of expanding here to copy what the Germans were doing in Europe. उसकी वजह से there was the Japanese colonization in Korea, China, and a lot of Southeast Asian countries. Now, because of that, till this date, China and Korea, especially South Korea, have very tense relationships with Japan. तो ये आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया और जापान के बीच में देयर इज लाइक एन आइलैंड डिस्प्यूट. जैसे इंडिया में कश्मीर पे डिस्प्यूट है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसे जापान और साउथ कोरिया के बीच में देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर एन आइलैंड. कोई बोल रहा है, जापान बोल रहा है कि वो उनका है और कोरिया बोल रहा है नहीं है हमारा है. तो एक वो है. और चाइना का तो खैर वैसे उसका 14 नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका सबके साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर. Anyways, going back, so once the Allied forces defeated the Axis powers, and because of the existence of Russia and China, US got a bit spooked कि communism is on the rise, so it started to put its footprint in East Asia. USA did that in the form of, like, even though it bombed Japan during the World War II, it sort of mended relationships with Japan and was one of the first investors into Japan post-war. And it did that too with when South Korea was under America and North Korea was under Soviet. उसके बाद we all know that the split happened between North and South Korea during the Korean War of 1950 to 53. And in 53, and in 1953, a ceasefire was called. Till this day, the war is not over. The war अभी भी चल रहा है, बस ceasefire है between the two countries as of now. So now we have North Korea, or the Democratic People's Republic of Korea, and we have the Republic of Korea, which is now South Korea. Now because of the bifurcation of the Korean Peninsula, it has led to a lot of social repercussions in the South Korean society. I cannot speak for North Korea because it is a very heavily guarded country and not much information gets out. So whatever we do know, we know it from South Korea. There, like, the men have to go for compulsory military exercise for like 1.5 to 2 years, and they have to do it from when they turn 18 to the age of 30. And you are exempt from military service only if you are like a
Nobel Prize winner or an Oscar winner or have won the Grammy or have won an Olympic medal or something like that. So there are certain rules regarding that. So, so that one aspect of South Korean society is unique in East Asia. Now, geography में North Korea and South Korea will be treated differently, but North Korea में China, Russia north में है and Republic of South Korea to the south. For South Korea, you have North Korea to the north, then you have the Sea of Japan to the east, East China Sea to the south, and Yellow Sea to the west. And the southeast is separated from the Japanese islands by the Korean Strait. Now, ये सब now all of this is comes under natural boundaries. ये आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा, so please ये इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहिए क्योंकि a lot of questions जीके में geography related आते हैं. Now, the Korean peninsula as such was divided in 8 provinces. Now, ये था before bifurcation. Now, post bifurcation, there is a lot of messy tiffs going on between North and South Korea because North Korea is trying to claim a lot of provinces for itself, and South Korea is like, no, it's not. But compared to, say, Japan and China, the provinces in Korea are not that important. Just उनका चाइना सॉरी साउथ कोरिया में मेजर एरियाज होंगे जैसे ग्वांगजू है, बुसान है, वैसे एरियाज आप फ्लैग कर दीजिए सो दैट आपके दिमाग में तो रहे अच्छा है कि कुछ एरियाज इधर है. Now, ethnicity as such, it's just the Korean ethnicity. Now, Japan, China, and Korea, like North and South Korea, are very homogeneous countries because of the lack of colonization by the European nations and even amongst themselves. They didn't have that much variation. So अब तक that's why in right now highly globalized world, it's proving to be a bit difficult to interact with them because of, say, the language barrier and all of that. Now, language, it's the Korean language, and you will also find Chinese characters in the form of Hanja in Korean. So it's safe to conclude that the Chinese language has had a massive influence. The Korean language में भी Chinese characters आपको मिलेंगे in the form of Hanja. तो चाइनीज लैंग्वेज है ने पूरे मतलब ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस किया है. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. रिलीजन में ऑडली बाकी चाइना और जापान से अगर कंपेयर करो तो क्रिश्चियनिटी इज बहुत मिलेगा आपको कोरिया में. क्रिश्चियनिटी उधर हैज़ अ फुट होल्ड. Government style also, North Korea is a one-party regime and South Korea is a multi-party regime. Basically, उधर election होते हैं और North Korea you could say is like China के तरह है, बस एक पार्टी है, वो बस अपने अंदर ही election करते हैं और नए ruler को establish करते हैं. ना कोरिया में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, बस 2 है. एक तो मार्च फर्स्ट मूवमेंट था 1919 में अगेंस्ट द जापानीज ऑक्यूपेशन दैट हैपेंड, और साउथ कोरिया में बाइफर्केशन के बाद देयर वाज अ ग्वांगजो अपराइजिंग इन 1980 एंड टिल डेट दैट्स द सबसे खून खराबा वाला मूवमेंट है साउथ कोरिया में अगेंस्ट द मिलिट्री.